Yes, good morning, guys. Good morning, students. Nikita, Sangeeta, Jennifer, how are you? So, students, we are into the last leg of this chapter. That is chapter 4, risk assessment and internal control. So, one of the topics we had left out that we shall be completing today. That is automated environment. So, students, what is automation? What is automated environment? So students, as you know that an automated environment means a business environment in which all the business processes, functions, accounting, and much more, even decisions in some cases are taken with the help of are taken using IT systems, using computers. So an environment, a business which which operates in such environment, which operates in such surroundings, we call it as an automated environment. Okay, students. So automated environment, it refers to a business environment in which processes, operations, accounting, and even decisions are carried out by computer systems, or substantially with the help of, you can say, computer systems or IT systems. So such type of environment is called as automated environment. So uh, like students, from the very beginnings, from the very moment, uh, uh, say we talk about a manufacturing entity, a manufacturing company. So from the very moment a purchase order is placed till till the sale of final product, the whole process is automated. So whether the order is to be placed or not, whether the stock requirements determine that such order is to be placed at first hand, who will place this order, who is the concerned authorized person, and what would happen on receipt of this material in the company. So all things are, and even the production processes, how the production line is scheduled, and ultimately when the product is sold, the billing process and its recording in the books of accounts, its accounting. So the moment the invoice is raised, it is automatically posted in the sales account and the customer's account. So all these processes are integrated, are linked with each other. How? With the help of IT systems, using IT systems. So such an environment is called as automated environment. Say students, you want to travel by air, so you book the airline ticket. So the whole process there is of an airline company, of an airlines, is automated. Okay, so these kind of environments is called as automated environment. So the key of automated environment is use of
IT systems in managing business operations. So use of IT systems in managing business operations, processes, and accounting, to which we are concerned as auditors, and even decision making in those companies. Okay. So what are the key features of uh, automated environment? So fairly simple, students. The more an business environment is automated, the more a business environment is automated, the less human intervention is involved. So all the decisions are taken using IT systems based upon predetermined criteria, which is there in the software. Okay. And students, you have to remember that the more a business environment is automated, the more it is complex. It doesn't become simple. So this is the key point you have to remember in case of automated environment. That if a business if degree of automation in a business is such that it is automated to a great extent, then it would be more complex to audit. It would not be easy to audit, rather it would be more complex from the point of view of an auditor for an audit. Although automation would be providing many advantages to business, like in terms of faster operations, less manual intervention, quicker results, ability to process large volume of transactions in a small amount of time. But from the perspective of auditor, from the point of auditor, it becomes more complex. Because why? Because now the auditor's attention would be focused on more on testing controls and and see what happens if there is some error in some control, or if the control is not operating, then it is affecting the whole company, it is affecting the whole organization uh, at many levels. So the error or any misstatement resulting from it can become pervasive. It can affect many things. It can affect many elements of financial statements. So that is why we say that the more a business environment is automated, the more it is complex to audit. It becomes more complex to audit. It becomes more complex from an auditor's point of view. So this much you have to understand, students. This is the key point, students. Remember, this is a important line, and this is an important takeaway. So students, like I give you an example. You take example of a bank. So now, as you know, banks operate on CBA system, core banking solution. So you can carry out any real-time transaction. Suppose if there is some fault, if there is some error in uh, executing command, or in executing formula for application of interest at the central office level, at the head office level, then it is going to affect the whole bank. So it would not be limited to one branch only. So it would be affecting the whole bank. So therefore
it becomes more complex from point of view of an auditor. Okay. Yes. The page number in your module, guys, is 3.54. It is 3.54. So what are the advantages of automated environment? These are very common sense advantages. You already know, like enables faster business operation, obviously accuracy in data processing. So huge amount of data can be processed accurately within a shorter span of time. Ability to process large volume of transactions. Without automation, students, we can't even think of that large organizations can function in today's complex environments. Better security and controls, less prone to human errors. So if the controls are effective, if they have been properly designed, so obviously since there is no human intervention, or you can say minimal human intervention, so they are less prone to human errors. Provides latest information in real time can be obtained. Reports can be generated in real time. Okay. So integration among business operations. So it also leads to sort of integration, sort of connection between all the areas of operation, between all the departments. Like say in case of manufacturing company, between purchase, production, sales, everything, it gets integrated and it comes on the same platform, and it gives the management a clear bigger picture, a clear overall view. Okay, so these are the some of the advantages of an automated environment. So students, like some companies these days now use systems like ERP. So ERP, what does it mean? ERP is enterprise resource planning. So students, you have heard the name of companies like SAP, Oracle. So these provide software. SAP is a German company. So these provide software which integrates all the business processes of the company, right from say procurement to its processes, to production, to sales, to HR. So it the software is of such kind that that it integrates all the business processes. Okay, so if a company is using such a type of software like ERP, so it would be more complex to audit because it is more automated. And if you are maintaining accounts on basis of just accounts on basis of some sort of software, then it would be less complex to audit because all your business processes are not integrated. Okay, so this students, you have to remember. So obviously before doing audit and while conducting audit also, the auditor has to understand the IT system. So it is the part of understanding the company, I would say, because you, unless you know that on which kind of system the company is operating, so obviously you will not be able to do justice to the audit. So which type of software the company is using, whether it is on ERP or whether it is just maintaining its accounts using some sort of software, and within that, what is its architecture. Okay, so
these kind of things, whether the software has been developed in house or it has been procured. So all these things have to be kept in mind by the auditor while understanding the IT environment. So you have to understand that understanding the IT environment of the company is one of the part of understanding the company as a whole. Okay, so these days, with the advent of IT in recent past, it has become a very crucial area. Okay, so students, now we discuss the risks arising from use of IT systems. So far we have discussed about the benefits which can arise from IT system, but what are the risks which arise from the use of IT systems? These include inaccurate processing of data. से अगर सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, सॉफ्टवेयर में ही कुछ गड़बड़ है, तो it would lead to inaccurate processing of data. वो और that error, that mistake would not be restricted to one segment. It would be affecting many areas. Okay, unauthorized access to data. So the data may be accessed by people who are not unauthorized, who are not authorized. So there can be unauthorized reach to data, and say it can also happen that data is changed directly without proper authorization, backend changes which we call. So or there can be access to data by certain persons which we call as privileged use, so super users. So but all these kind of things can be controlled, these can be managed, but you have to understand that these, in fact, these are the risks which emanate from the use of IT systems, which flow from the use of IT system, and these risks exist. Okay, whether these risks in fact materialize or not, that is another matter. But you have to first understand that at the first place, such kind of risks exists from the use of IT systems. Like another risk is loss of data. Suppose if backup is not being taken, if there is no proper backup policy in the company, so the company may lose precious data. Or if suitable changes are not made in the programs of the company, say if there is some change in some rules, in some regulation, or in some law, but the company fails to make the required changes in its software, in its program, or the software is not responsive to those changes, so obviously it is a risk which flows from use of IT systems, and the company may be engaged in wrong reporting. Okay, or there can be lack of adequate segregation of duties, because some persons may become too powerful. Even IT persons, some IT persons can become too powerful. So these are some of risks emanating from the use of IT system. So we are considering these risks from the point of view of an auditor, and we have to think what such kind of risks can have an impact
on audit of financial statements, because we as auditors are concerned with the audit of financial statements. So we have to consider impact of such risks on audit of financial statements as auditors. That is why it is necessary for an auditor to understand the IT system, and to have an idea of its working, of its architecture, what it is supposed to do, how complex it is. So these all things help the auditor um, in assessing assessing and evaluating the risks emanating from use of IT systems. Okay, guys. So clear, students. So impact of IT related risks. So all the risks, students, which are there, these would be there in every IT system. But the point is that you have to that the company has to reduce those risks. Okay, so because if these risks are not mitigated, what is mitigated, students? Mitigated means reduce. So these can impact audit in different ways, like impact on substantive checking. So students, if tell me, if IT controls are not operating effectively, then what would happen? It simply means that the controls in the company are not operating. So the auditor would not be gaining satisfaction. He would not be able to rely upon the controls, and therefore what he would have to do, he would have to increase his area of substantive checking. So therefore it is very important that such a risk is reduced, such a risk is mitigated. Okay, so impact on controls, this is also related to first point. And impact on reporting. Due to regulatory requirements in respect of IFC, it may lead to modification of auditor's report. So students, if the controls are not operating properly, we would be reading about these internal financial controls a little bit later today itself. So you can understand it to be internal controls broadly here. Okay, so if the internal controls are not operating effectively, then it may have an impact on the auditor's report, because the auditor has to report on internal financial controls under Companies Act. So you would be reading about it in your chapter on auditor's report, and we will also be touching this aspect today. Okay, so therefore it can have an impact for the audit report also. So clear, students? So therefore you have to understand that IT risks, that risks which originate from the use of an IT systems have to be reduced, have to be mitigated. If such risks are not mitigated, then it can have effect on the area of checking, which has to be done by the auditor, on the area of substantive checking, on the area of substantive procedures, that those procedures might have to be enlarged.
if the controls do not operate effectively, the auditor may have to engage in verification of 100% of transactions. So it would not only increase the audit cost, but it would also affect audit efficiency. Okay, so and uh, and and if these risks are not addressed, students, it will also have effect on the auditor's report, because the auditor may have to include this thing in his report. It may lead to modification of his opinion. So how it leads to modification of opinion, this you would be reading in subsequent chapters, and we would also be touching about this thing, law requirements, that which are the sections, which are the provisions in Companies Act 2013 uh, which require to state that whether internal financial controls are operating effectively or not. So this point is we shall study within this chapter. Okay. Yes, Ashok, you are saying please explain point 8.2 on page 3.55. So let us see. Yes. Yes, Ashok, this point is basically it basically relates to obtaining an understanding of IT system. So you have to remember so much that obtaining an understanding of the IT system is one of the part of understanding the company. So unless an auditor gains an understanding of the IT system, that which IT system the company is using. Say I had given you example of ERP. So ERP systems are more complex because all the processes are integrated. So unless until auditor gains understanding of the system which he is going to audit, अगर उसको मालूम ही नहीं है कि वो सिस्टम चलता कैसे है या उसके क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो वो उसका एक प्रॉपर ऑडिट कैसे कर पाएगा. So this much you have to understand that what kind of IT system the company is using. Okay, how complex it is, whether it is whether it involves integration of all business processes. So all these things have to be considered by the auditor. So basically you have to remember that auditor has to gain an understanding of the IT system prevailing in the organization, prevailing in the company. Okay. So type of controls in an automated environment. Now we come to type of controls in an automated environment. Students, you have to understand all these things in a general way, not in a very technical way, in a general way, because you are not supposed to be a specialist IT person. This is not your field, this is not your domain, but you have to understand so much which impacts your audit. So you have to gain understanding of so much which is going to impact your audit, which is going to impact your opinion, which is going to impact your report. Okay. So type of controls in an automated environment. So there are three types of control, students, three broad categories. So तीन broad categories controls की हैं जो automated environment में
जिसको सेग्रीगेट किया गया है। ये तीनों कैटेगरी स्टूडेंट्स आपको याद रखनी है। दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो व्हाट आर दीज थ्री कैटेगरीज? जनरल आईटी कंट्रोल्स, application controls, and IT dependent controls. So students, what are general IT controls? So general IT controls, students, uh, like students, a company may be using many applications. So there obviously there would be certain controls, IT controls, which are not confined to one application only. So these controls um, affect many applications which the company, which the business is using. Such type of controls are known as general IT controls. So such type of controls are general IT controls. So what are general IT controls? General IT controls are policies and procedures. These are policies and procedures that relate to many applications and support the effective functioning of application controls. So these are applicable to different applications, and these in fact support application controls. So general IT controls help in securing help in data security. So what are different type of general IT controls? These three things are given here. Number one is controls over data center and network operations. So data center, so students, you know about the data center. So जिस जहां पे कंपनी के सारे जहां सर्वर मेंटेन होते हैं, so that is data center. So the objectives of control over data center and network operation is that production systems are processed to meet financial reporting objectives. जहां से सारी all commands are executed, batch commands are executed. So watchers, students, जैसे banks में batches में चलते हैं, तो these kind of things, these kind of controls are known as controls over data center and network operations. And these controls also deal with such matters. Suppose कोई unfortunate incident हो जाए, तो जो कोई कॉन्टेजेंसी हो जाए, तो उसका कैसे व्हाट वुड बी द स्टैंड बाय अरेंजमेंट, लाइक बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान। कोई डिजास्टर हो जाए तो कैसे डाटा रिकवर होगा। सो दीज काइंड ऑफ ऑल थिंग्स आर डेल्ट बाय controls over data center and network operations. So we call such controls as controls over data center and network operations. Okay guys, second thing is program change controls. Suppose if the company wants to change the program to meet some external requirements or to meet some regulatory requirements, so obviously it would require changes at the back end. So how that change would be executed? What would be the change management process? Such controls are called as program change controls. So such controls are known as program change controls. These are also part of general IT controls. And third is as access security control. So how programs are to be accessed, how systems are to be accessed, what are controls operating over that only authorized persons have got access to the systems,
or what is the differentiation for what is the basis of differentiation for accessing one program or one application? Some users may not be able to access all the programs or all the applications. So such controls are known as access security controls. So basically, you have to understand, students, that I am again repeating it, that general IT controls are those controls which are not restricted to one applications. These affect many applications, and these support application controls. So these are divided further into three categories. These three categories are controls over data center and network operations, program change controls, and access security controls. So what are controls over data center and network operations? These controls relate to the security of data. These controls deal with such things like disaster recovery plan, like business continuity plan. Like if some disaster happens, what is the company's policy to recover the data? So these controls deal with such type of things, and program change controls deal with when some changes are required in the program, say in connection with some change in law or change in regulation, or it is required due to by the company itself. Then how that change would be carried out? What would be the change management process? How that change would be carried out in the software? So these such type of controls are called as program change controls. And third type of controls within the overall heading of general IT controls is access security controls. Like how a program would be accessed, how it would be ensured that no authorized person can access the program. So all these type of controls fall within the meaning of general IT controls. And another category of general IT control, students, is application system acquisition, development, and maintenance controls. A fourth category within the general IT controls is application system acquisition, development, and maintenance controls. Like students, what does this mean? This means that a company wants to acquire some new application. So how these application would be acquired? Whether this application would be acquired from the vendor, whether it would be customized, or whether it would be developed in-house. So these type of things are considered in such type of controls. So the objective of such controls is to ensure that systems are developed and implemented to meet financial reporting objectives. It includes management of development activities, project initiation, analysis, testing, and quality assurance. So suppose a company, students, wants to use some new application for its business. So then how such application is to be acquired at the first place? So what are the controls implemented by the company to ensure that application which is to be new application which is to be acquired, it meets its financial reporting objectives? So these type of controls also fall within the meaning of general IT controls. So now you have got a fair understanding of, students,
What do we mean by general IT controls? So general IT control, students, remember I am repeating again its four parts. Number one, control over data center and network operations. Number two, controls over program change. Number three, controls over access security. And number four, controls over application system acquisition, development, and maintenance. How an application, a new application is to be acquired, developed, and maintained. Okay. So now we come to application controls. So what are application controls, students? सो एप्लीकेशन कंट्रोल्स जो कि स्टूडेंट्स एक एप्लीकेशन के अंदर होते हैं, जो एक बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर होते हैं, दीज आर नॉट परवेसिव कंट्रोल्स जो पूरे के पूरे आईटी सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं. दीज कंट्रोल्स आर रेलिवेंट टू वन बिजनेस एप्लीकेशन. ओके. लाइक लाइक कंट्रोल्स कि कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन के रिजल्ट एक्यूरेट है कि नहीं. ओके. सपोज कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उसमें उसका सपोज आउटपुट ट्रायल बैलेंस देना है, तो क्या वो प्रॉपर ट्रायल बैलेंस दे रही है? उस उसके रिलेटेड जो कंट्रोल्स हैं उनको हम एप्लीकेशन कंट्रोल्स कहते हैं. ओके. So examples of automated application controls include checks and validation of input data. So students, कोई भी किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप कोई भी डाटा फीड करते हैं तो उसमें तीन प्रोसेसेस होते हैं. नंबर वन इज इनपुट डाटा, नंबर टू इज प्रोसेसिंग एंड नंबर थ्री इज आउटपुट डाटा. सो इन तीनों के बारे में जो कंट्रोल्स हैं उसको एप्लीकेशन कंट्रोल कहते हैं. लाइक आपने कोई डाटा फीड किया, कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने कोई डाटा फीड किया, तो अब जो एप्लीकेशन है वो उस डाटा को, जो डाटा आपने फीड किया उस डाटा को चेक करती है. उसमें कंट्रोल्स लगे हुए हैं कि ये डाटा जो फीड हो रहा है ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं. लाइक उसमें कुछ कुछ सारे का सारा वो उसको वैलिडेट करेगा अपने पैरामीटर्स पे, और कुछ फील्ड उसमें एडिटेबल होंगे. अगर आपने 10 चीजें फीड की हैं उसमें से, तो 10 में से 6-7 चीजें वो वैलिडेट करेगा और सिर्फ 2-3 चीजें ही उसकी ऑप्शन देगा आपको एडिट करने की. So these type of controls we call it as checks and validation of input data. Okay, so similarly sequence number checks, user reasonable checks, so such type of checks like कि suppose मैं कोई अकाउंट्स चेक कर रहा हूं तो अकाउंट नंबर में मैं अकाउंट नंबर चेक कर रहा हूं, तो अकाउंट नंबर्स के अंदर कोई अगर कंपनी ने सारे न्यूमेरिक वर्ड डाल रखे हैं तो कोई कहीं किसी के साथ कोई अल्फाबेट तो नहीं है. So I want to gain such type of satisfaction. So such type of things, such type of controls are called as application controls. Okay. So now we come to IT dependent controls. So IT dependent controls, students, वो controls हैं that make use of information from use of IT systems, but the control is performed manually. Suppose the company has to take some decision, the decision would be taken manually, but it would be taken using the output of IT system by making use of some report generated from the IT system. So such type of controls are called as
IT dependent controls. So such type of controls are called as IT dependent controls. So what are IT dependent controls? IT dependent controls are basically manual controls that make use of data or information or report produced from IT systems and application, even though the control is performed manually. So the design of such control depends on the reliability of source data. So the company has to take decision on the basis of some report generated from the IT system. So such type of controls are called as IT dependent controls, because these are dependent upon the reports, upon the data generated by IT systems. So if the data generated by IT system is not reliable, then a proper decision will not be taken. So this is the importance of IT dependent controls. Clear, guys? So again, I am repeating it. There are three type of IT controls. Number one is general IT controls. Number two is application controls. And number three is IT dependent controls. So for a quick recap, general IT controls relate to overall IT system. These relate to many applications in the business, and these can be data center and network operation controls, program change controls, how program is to be changed, access security controls, and controls over application acquisition, maintenance, and development, how new applications are to be acquired. So these we call as general IT controls. Second is application controls. Application controls, you have to understand that these operate at the level of application. Okay, so these relate to these may relate to like data validation. When data is fed into the system, the controls validate the data कि जो डाटा फीड किया है किसी एम्प्लॉय ने वो वैलिडेटेड है कि नहीं है, जो कंपनी के सेट पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉफ्टवेयर वैलिडेट करता है कि input data at the time of feeding stage whether it is correct or not. Okay, and second part relates to processing, and third part relates to the output data. But all these controls operate at the level of that application, at the level of that one application which we are considering. And number three is IT dependent controls. So IT dependent controls are those controls which are taken manually using the output generated by the IT system. So such type of controls are known as IT dependent controls. So if the output generated by IT system is inaccurate, so obviously the decisions taken on the basis of those reports would also be not proper. Okay, guys? So clear, students? So the relationship between application controls and general IT controls is such that general IT controls are needed to support the application controls, and both are needed to ensure complete information processing through IT systems. So application control, students, at the application level, you have to understand that these cannot operate without general IT controls. तो जनरल आईटी कंट्रोल्स तो चाहिए ही ना, एक एप्लीकेशन ठीक तरह से काम करे उसके लिए आपको जनरल आईटी कंट्रोल भी चाहिए.
उसके लिए आपको चाहिए कि आपका डाटा सेंटर ठीक तरह से काम कर रहा है, आपके आपके कोई प्रोग्राम में चेंज हो रहा है तो वो ठीक तरह से काम कर रहा है, क्योंकि दीज इफेक्ट all the applications operating in the company, including the application of जिसके की कंट्रोल्स हम कंसीडर कर रहे हैं. Okay, so that is the relationship between general IT controls and application controls. So general IT controls are needed for to support the functioning of application controls. So this point you have to remember, students, that general IT controls are needed for functioning of application controls. So that is how general IT controls are related to application controls. Clear, guys? Yes. So testing methods in an automated environment. So students, how do we test controls? You leave automated environment. How an auditor tests controls? क्या what by what methods he tests controls? Do you remember? How an auditor tests control? क्या what ways are available to him to test controls? Do you remember, guys? So whatever the ways are available to the auditor to test controls, the same ways are available to the auditor to test controls in an automated environment. So what are those ways? These ways, students, you have already studied. These are inquiry, inspection, observation, and reperformance. Same things. तो सेम थिंग स्टूडेंट्स, ये आपको स्टूडेंट्स 4 चीजें याद रखनी है. दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑडिटर कंट्रोल कैसे टेस्ट करता है. 4 things are available to him. Number 1 is inquiry, number 2 is observation, inspection, fourth is reperformance. Okay, so these are inquiry, observation, and reperformance. So इंक्वायरी इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट टेस्ट. तो इसके थोड़ा इन चारों मेथड्स के टेस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए. इंक्वायरी इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट टेस्ट, बट इट ऑल्सो गिव्स द लीस्ट ऑडिट एविडेंस. सो स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग लाइन. So think over this line. Inquiry is the most efficient audit test, but it also gives the least audit evidence. So what is the meaning of it? Inquiry करना is the one of the easiest jobs. मेरे को कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मैं इंक्वायर करूंगा कि सर ये क्या सिस्टम है आपका, बताएंगे मेरे को. तो I am seeking information, or say I am sending a mail to the officer of the company inquiring something. So it is the most efficient. Time नहीं लग रहा, that is why it is efficient. I am simply asking orally or I am writing a mail. So
It is the most efficient audit test, but it provides least audit evidence. तो क्योंकि मैंने इंक्वायरी के साथ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उसी इंप्लॉय की बात पे भरोसा करके उसका रिस्पॉन्स कंसिडर करके अगर मैं आगे चल पड़ा तो इट वुड बी प्रोवाइडिंग द लीस्ट ऑडिट एविडेंस. So therefore it is said that inquiry is the most efficient audit test, but it provides the least audit evidence. सबसे कम ऑडिट एविडेंस इससे मिलता है इंक्वायरी से. सो देयरफॉर इंक्वायरी शुड ऑलवेज बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर टेस्टिंग मेथड्स. सो स्टूडेंट्स ये आप हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स दोबारा आपको ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज दोबारा आ रही है. सो इसलिए आज स्टूडेंट्स इन कंसेप्ट्स को अपने माइंड में एस्टेब्लिश कर लें. इन पे एग्जाम में करेक्ट इनकरेक्ट टाइप या एमसीक्यूज बनता है, बहुत अच्छे बनते हैं. सो इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट. सो इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट. खाली इंक्वायरी से ऑडिट एविडेंस नहीं मिल जाएगा. Okay, so re-performance is an effective audit test and gives the best audit evidence. सबसे ज्यादा ऑडिट एविडेंस, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी आपको? जब आप उस कंट्रोल को रीपरफॉर्म करेंगे. जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बैंक रिकंसिलिएशन का एग्जांपल दिया था पहले भी. जनरल एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में नहीं. अब जनरल एग्जांपल मैं रीपरफॉर्मेंस का आपको दे रहा हूं. लाइक कि कंपनी में देर इज ए सिस्टम दैट अकाउंटेंट हैज टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एवरी मंथ. सो इट इज ए कंट्रोल ऑपरेटिंग इन द कंपनी. The accountant has prepared the bank reconciliation statement. That is also true that control has is in operation. So but if the auditor prepares the bank reconciliation statement himself, he reperforms that control, so obviously it would be giving him the most satisfaction. Okay, but obviously it would have a cost and it would be time consuming. It would be time consuming, and therefore we say that it is not efficient. It is not efficient, but it would be giving the best audit evidence. Although it would be time consuming, it would be costly, and it would not be efficient. But it would be effective. It would be very effective. तो स्टूडेंट्स क्लियर है आपको ये इंक्वायरी और रीपरफॉर्मेंस? एंड जनरली स्टूडेंट्स इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन गिव्स द एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस. सो अगर स्टूडेंट्स आपने इंक्वायर किया, यू इंक्वायर फ्रॉम द सम एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग सम सिस्टम, रिगार्डिंग सम कंट्रोल, और एम्प्लॉय उसके साथ कंपनी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाती है विच शो दैट द कंट्रोल हैड इन इफेक्ट ऑपरेटेड ड्यूरिंग दैट पीरियड. ओके, लाइक सपोज हम एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं. तो बैंक्स में स्टूडेंट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होता है. हर एक एम्प्लॉय जो है डिफरेंट ड्यूटीज उसको असाइन की जाती हैं, और वो ड्यूटीज टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती हैं, से मंथली और फोर्टनाइटली. कोई एम्प्लॉय सेम सीट पे कॉन्टिन्यूसली वही काम नहीं करता. विद इन वन डिपार्टमेंट ऑल्सो ड्यूटीज चेंज. ओके, तो अगर
वो बैंक, वो ब्रांच आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखा रही है जिससे कि ये पता चलता है कि ड्यूटीज टाइम टू टाइम चेंज होती रही हैं. So what does it mean? It means that control has operated effectively during this period. So what you are doing by seeing those documents, you are inspecting. So therefore, inquiry plus inspection, it gives, वो एविडेंस भी देती है, एविडेंस भी अच्छा है, एंड इट प्रोवाइड्स एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस. आपको टाइम भी ज्यादा नहीं लगा. इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन. Okay, so however, which audit test to use, students, is a matter of professional judgment, and it would vary upon many things, like like the nature of the company, like the overall control environment, and what is the risk assessment of the auditor. So it depends upon many things. So we cannot say that one test is always better in all cases. So it would change from circumstances to circumstance. So what is written here are general indicators, are general guidelines to increase your understanding. Okay, so again, students, I am repeating, there are 4 ways in which an auditor can test controls. These 4 ways are inquiry, inspection, observation, and reperformance. Okay, and inquiry is the most efficient way, but provides the least audit evidence. You have to remember, inquiry is not alone sufficient for testing the controls. It has to be combined with other things, either inspection, observation, or reperformance. Now, what should be the combination? How the auditor should do it? This depends upon the circumstances, and upon the auditor's judgment of risks. It depends upon his professional judgment and varies from case to case. Clear, guys? So students, what happens practically, that controls, even in an IT system, also consists of combination of controls in an, even in an automated environment. These consist of a combination of manual controls and automated controls. Okay, so because to run any business, human intervention is needed. So uh, therefore, it usually happens that controls consist of a combination of automated controls plus manual controls. Okay, so controls in IT system consists of a combination of automated controls, like controls embedded in computer programs, and manual controls. And manual controls may be dependent upon, may be independent of IT, or may be produced by IT, or in some way may be dependent upon IT. So जैसे like we had discussed about IT dependent controls. Okay, so decisions are taken manually, but the decisions are taken on the basis of the reports, on the basis of data generated by IT system. So this topic is all about manual controls and automated controls. Manual elements versus automated elements in automated control.
So in some circumstances, students, manual controls may be more suitable, may be more required. So what are those circumstances? Like large, unusual or non-recurring transactions. So there are transactions which do not occur quite often. Like किसी कंपनी ने कोई अपना बिजनेस बेच दिया, कोई कोई किसी कंपनी ने कोई सब्सिडरी कोई एक्वायर कर ली, जिसमें उसने 51% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर लिए. So these are kind of transactions which are of a non-recurring nature, which do not happen quite often, which do not happen quite frequently, rather which happen infrequently. So in such cases, manual controls, manual elements may be more suitable, because in such cases human judgment is involved कि उसकी आपको अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या करनी है, how these things, how business acquisition is to be acquired, or how business disposal is to be recorded in financial statements. So in such cases where large, usual or non-recurring transactions happen, in such cases manual elements may be more suitable. Obviously, circumstances where errors are difficult to define, anticipate. So transaction, students, those areas which are not of repetitive nature, जो रिपीटिटिव नेचर के एरियाज नहीं है, ट्रांजैक्शंस की नेचर रिपीटिटिव नहीं है, तो उसका प्रॉपर उसका कंट्रोल्स भी नहीं बन सकता. तो उसके लिए भी मैनुअल एलिमेंट्स ही रिक्वायर्ड है, मैनुअल कंट्रोल्स ही रिक्वायर्ड है. इन मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स. सो ऑब्वियसली whether automated controls are effective or not, this is again job of people. So they have to monitor whether automated controls are working effectively or not. So obviously this is again job of the people running the company. So this part, students, we had done uh, in the components of internal control as part of monitoring of controls. So it is again a job of monitoring of controls. So there also manual intervention would be required, because who would review it कि जो IT सिस्टम ने रिपोर्ट्स प्रोड्यूस की हैं, whether these serve the purpose. तो उसको देखने के लिए भी तो कोई ना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, कि कोई ना कोई लोग ही देखेंगे उसको. सो इन सच केसेस मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल आर मोर suitable. Okay. So manual elements in internal control may be less reliable than automated controls, because they can be easily bypassed, ignored or overridden. So these are again the same disadvantages of manual controls, which every one of you knows, that whenever manual controls are there, obviously these depend upon human judgment, and these can be bypassed or overridden, or decisions can be taken erroneously. Wrong decisions can be taken. These are always prone to errors. Okay. So consistency of application of manual controls cannot therefore be assumed. So whenever we talk about manual controls, so we say so there is always a doubt whether these have performed consistently throughout the period. Like I am talking about, if about the controls in a company for a year. So if the controls are manual, then I will always have a lingering doubt in my mind
whether these controls have operated effectively throughout the period, because consistency might not be there. So I would be very much worried about the consistency aspect, कि मेरे सामने तो कंट्रोल ठीक चल रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर जो इवेंट्स पास्ट में हो गए तब कंट्रोल ठीक चला कि नहीं चला. सो आई वुड बी trying to gain satisfaction about those things. I would be searching about evidence about those things. Okay, students. So that is one of the drawback of manual elements in internal control. So therefore, manual elements in internal control are not suitable for transactions, high volume or recurring transactions, or those activities, control activities where the function can be automated. So if there are transactions which are happening in large volumes, in great numbers, or these are happening repetitively, these are happening, these are of recurring nature. So in those cases, manual elements may not be suitable and automated elements are more suitable. And if the control activities can be, if the control activities can also be automated, then also automation is useful. Okay. So the extent and nature of risks to internal control vary depending upon the characteristics of the entity's information system. Okay. तो कैसा उसका रिस्क है, ये डिपेंड करेगा कि कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, हाउ द कंपनीज इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ऑल अबाउट. So this is an overview of audit approach in an automated environment, which is given in your module, students. And now we come to, students, data analytics for audit, and another topic is digital audit. Data analytics for audit. स्टूडेंट्स क्या मतलब है इसका, डाटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट? ये स्टूडेंट्स, डाटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट. So students, as you gather from its name, it means that it relates to analysis of data. It relates to analysis of data for purpose of audit. If we break this data analytics for audit, then it means that analysis of data for purpose of audit. Students, large companies in large companies there is huge data thrown out by the systems. So if the auditor can analyze such data meaningfully, efficiently, and effectively, then obviously his audit is going to be not only to be his audit is going to be effective, but it would also be efficient. He would be performing greater work in lesser amount of time, and that too effectively.
So that is data analytics for audit. So there are softwares, guys. There are softwares and tools available. There are software and tools available which help the auditor in analyzing large amount of data. So this is what we mean by data analytics for audit. So students, किसी भी topic, as I have been telling you quite often, that before you understand, before you go to understand the details of a topic, first understand what does it basically mean. जब तक आपको उसका मतलब समझ में नहीं होगा कि ये टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, तब तक आप उसकी डिटेल नहीं समझ पाएंगे. अगर आपको उसका बेसिक मीनिंग समझ में आ गया, तो आपकी 50-60% चीजें उन्हीं दो लाइन से, उन्हीं दो तीन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उससे डेराइव हो जाएंगे. Not only for this is true in audit, but it is also true in all other subjects. It is also true in all other subjects, and it is an yes, Durga, it is chapter 3. It is a mistake. So this is known as analysis of data for purpose of audit. So software tools are available which help the auditor in analyzing large amount of data. So one of such tools is CATS. One of such tools is CATS. So what are CATS? CATS are computer assisted audit techniques. So remember this term CATS and its full form, computer assisted audit techniques. So what are CATS? These are a tool for data analytics. These help the auditor to go through a large amount of data, to go through large amount of information, and to analyze the data. So these tools, these kind of softwares, these help the auditor in stifling through in perusing large amount of data and to arrive at the meaningful conclusions. Like मेरे पास सपोज डाटा है, तो मैंने उसमें कमांड चला दी कि किसी दिन में कंपनी ने किसी एक पार्टी को से 10,000 से ऊपर की पेमेंट तो नहीं की, which is in accordance with the Income Tax Act. You might be knowing that you can't make payment to a single party for more than rupees 10,000 on a single day. तो अगर मेरे को ये बात चेक करना है, तो मैंने उसके लिए इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए मैंने उसमें ये वाली कमांड चला दी. सो इमीडिएटली in a fraction of seconds I would come to know. So these type of things, या कोई control, whether some control has operated or not, this I can also say, this I can also seek from deploying computer assisted audit techniques, CATS. So
It is called as students data analytics for audit. And CAT's computer assisted audit techniques are one kind of tool which are available to auditor for data analytics. Okay, so students, you have got basic understanding. आपको इंटरमीडिएट लेवल पे खाली इतना ही समझना है. So in today's digital age, when companies rely on more and more on IT networks to operate business, the amount of data and information processed by these systems is enormous. So the combination of processes tools that are used to tap vast amounts of electronic data to obtain information is called data analytics. So इतना डाटा हो रहा है स्टूडेंट्स, जनरेट हो रहा है. अगर आपको हर एक, इफ यू वांट टू, अगर आपको सैंपल भी चेक करना है तो उसके लिए भी आपको डाटा एनालिटिक्स यूजफुल है, उसके लिए भी आपको कैट यूजफुल है, कैट्स यूजफुल है. सो दैट इज व्हाई वी से that the combination of processes tools that are used to tap vast amounts of electronic data. So what is to tap means? To tap, to understand vast amounts of electronic data to obtain the information. So जो उस डाटा को अंडरस्टैंड करके जो आईटी सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है, so you gather the information which is relevant for you. This is called as data analytics. So analysis of data, simple terms, data analytics. So data analytics, remember, it is not only useful for the companies, but it is useful also for the auditors. That is why we are studying it in the context of audit. So companies तो data analysis करती हैं, वो तो उनको अपनी प्रोडक्शन में भी यूजफुल है, कंपनी के बिजनेस प्रोसेसेस में यूजफुल है, प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए भी यूजफुल है, एचआर फंक्शन में भी यूजफुल है, इंप्लॉइज परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए भी यूजफुल है. लेकिन इसी तरह ऑडिटर के लिए भी डाटा एनालिटिक्स इज यूजफुल. ओके, सो द टूल्स एंड टेक्निक्स that auditors use in applying this principle, these are called computer assisted audit techniques or CATs. So there are specialized audit tools like IDEA. What is IDEA? IDEA is a software. So it is a software providing CATs. So it is a kind of software. So you import the data from you import the raw data into this software, and then you can apply the commands. You can apply the commands to go through that vast amount of data which you want to see. So IDEA is also a kind of software. So these type of students, CATs, these type of computer assisted audit techniques help the auditor in many ways, like in selection of audit samples, like in checking completeness of data, like in even doing simple things like recomputation, like checking accuracy of some parameters. ठीक है, like redoing some mathematical calculations, like क्या depreciation की calculation correct है कि नहीं. सिंपल चीजें करने के लिए अगर आप वो चीजें एक सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, तो obviously you would be getting the result, accurate results in matter of seconds.
and you can also make intelligent analysis. Okay, so all kind of these things can be done using data analytics. Okay, now another thing is, guys, digital audit. So digital audit students, आपको सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पे थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताया गया है. अल्टीमेटली यू वुड बी स्टडिंग इट एट योर सीए फाइनल. सीए फाइनल में डिजिटल ऑडिट के बारे में नए सिलेबस में पूरा का पूरा चैप्टर है. यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट लेवल पे देयर इज ओनली वन पैराग्राफ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस मच कि डिजिटल ऑडिट होता क्या है. डिजिटल ऑडिट मीन्स व्हेन द ऑडिटर makes use of digital technology, makes use of IT systems to carry out his the whole audit process. So this you can call as digital audit. Like okay, right, he does it right. In digital audit, it is, students, it is an emerging field. First you have to understand that it is an emerging field. So the auditor plans the audit also using IT tools. Risk assessment also he carries out using IT tools. Okay, and obtaining of audit evidence and its evaluation and final expression of audit opinion. These are all done digitally with least amount of manual intervention, using not only data analytics, which we have touched upon just right now, not only using cats, but using other methods also, like artificial intelligence, like RPA, like robotics process automation. So these things, students, you would be learning in your CA final. So for here, you have to understand so much that digital audit is a wider concept. It is a wider concept as compared to just data analytics for audit. Okay, so in data analytics, or when the auditor is using cats, he is doing all the other processes manually, and he is just using cats for the purpose of analysis of data. But in digital audit, the auditor is making use of IT tools, making use of IT technology right from the moment he planned the audit till the submission of audit report, till the final expression of opinion, including assessment of risks also. Okay, so this whole field is known as digital audit. Okay, so you understand now what is the difference between data analytics for audit and digital audit. So we'll see what is written in your module. So entities are embracing digitization as part of their operations. New technologies are helping companies and rethink the way the business is conducted. So in such a business environment, use of digital technology is being made by the auditor right from planning to expression of final opinion. Now that is the key thing. So when the auditor uses digital technology right from planning till the expression of final opinion, okay, by making use of, say, artificial intelligence, data analytics, and other latest technologies,
which help him understand business processes in a better way. So such an area, such a field is called digital audit. So it is, students, it is also a continuous evolving area, uh, and many new things are happening in this area. Many interesting things are happening in this area, and probably by the time you people qualify as chartered accountants, you would see that many new developments have taken place in this area by the time you join the profession. Okay, so digital audit is helping auditors to better identify risks, making use of technology. So students, are you able to understand data analytics for audit and digital audit? You have to understand that digital audit is a wider, broad, all encompassing concept as compared to data analytics for audit. Data analytics is just one part of digital audit, whereas digital audit is something bigger, where the auditor plans the audit using making use of digital technology, making use of digital information, making use of IT tools, right from planning till the end. So it is an evolving area, and with the change, with the developments happening in the technology at a very fast speed, you would see that uh, digital audit is going to be the future. You would see in coming years that digital audit is going to be the future. Everything which would be performed by audit, it is going to be done digitally. It is going to be done digitally in coming years. Okay. So clear, students? तो स्टूडेंट्स एक इसमें टॉपिक है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जो कि अभी पीछे हमने इस ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में भी उसकी थोड़ी सी रेफरेंस थी. सो you can understand, students, that why this topic, internal financial controls, because in Companies Act 2013, in Companies Act 2013, so when you would be going through company law, when you would be studying about Companies Act 2013, you would be knowing that this term has been used at many places in Companies Act. Internal financial controls, this term has been used at many times in Companies Act 2013, internal financial controls. So these basically mean the same thing generally what we had studied in internal control, like reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, compliance with applicable laws and regulations, safeguarding of assets. Okay, so and rather it is wider than internal control because it specifically includes prevention and detection of frauds. Okay, so this topic states that reference to internal controls is made in the following sections of the Companies Act. So you would be reading about, students, these sections when you would be going through your company law classes. So
Therefore, I would not be harping about these things right now, because you will not be able to grasp completeness of these things. You would not be able to grasp the complete import of these things. So there is section 134, where directors responsibility statements requires directors to state that company has laid internal financial controls. So directors have to state in the director's responsibility statement. Similarly, in certain case of companies, the auditor has to state in section 143 subsection 3, when the auditor gives his report, there are certain requirements which are to be reported by him in accordance with the provisions of Companies Act under section 143 subsection 3. So the auditor, in case of a company, he gives his report in accordance with the requirement of section 143 subsection 3. So this you would be reading in your chapter on audit report, which is in module 2. So their auditor has to report whether the company has adequate internal financial controls in its place, and also on the operating effectiveness of controls. So in certain companies, the auditor has to give a report on the fact whether the company has internal financial controls in its place, and whether these have operated effectively throughout the period. Okay, so there are certain thresholds to which this requirement law applies. So this threshold is there in section 143 subsection 3. So similarly, 1 2 more requirements are there which you would be reading in company law. Okay, so students, we shall be taking a short break of just 2 3 minutes, and we will come back after 2 3 minutes. So it would be very short break of 2 minutes, guys. Yes, just a short break.
Welcome back, guys. So, as I told you, we'll be doing a case study. So, we have with us CA Rajiv Sachdeva sir also. Yes, good Welcome, sir. morning. Good morning, sir. Yes, And good good morning, morning, sir. students. Good morning, all of you. Yes, sir. So, students, are you able to see the case study? Are you able to see the screen, guys? So you can go through the case study. You can go through the case study, and students, do not see the answers. My request to you is, do not see the answers from your module. Try to apply your own common sense and send whatever your mind says. Forget about it, whether it is right or wrong. Forget about these things. जस्ट रीड द केस स्टडी. इट इज अ वेरी वेरी शॉर्ट केस स्टडी. बहुत छोटी केस स्टडी है स्टूडेंट्स. आप थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ें. मैं आपको थोड़ा बता देता हूं. सीए पारितोष ये कंपनी के ऑडिटर हैं. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी हैव जस्ट बीन रिसीव्ड. ऑडिट के लिए उनके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड एंड फॉलोइंग इश्यूज हैव बीन फ्लैग्ड फॉर पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट. नाउ व्हाट ही इज डूइंग, he is he is assessing the risk in the financial statement. Okay. तो उसने क्या, what he has seen. So चार एस्पेक्ट, चार पांच चीजें इसमें दी गई है. what he has gathered, तो उसके बारे में क्वेश्चन है. सो पहला फर्स्ट एस्पेक्ट है, द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज फॉलन फ्रॉम 50 करोड़ टू 5 करोड़ इन करंट ईयर. पिछले साल उसका सेल्स 50 करोड़ थी, अब 5 करोड़ हो गए. जिस साल की हम ऑडिट की बात कर रहे हैं उसमें 5 करोड़ रह गई. ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड इन द मार्केट फॉर कंपनीज प्रोडक्ट. कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम है, इसकी वजह से. नंबर टू, ड्यू टू एडवेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, कंपनीज प्रोडक्ट्स आर बिकमिंग आउटडेटेड. कंपनी के प्रोडक्ट आउटडेट हो रहे हैं मार्केट में, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स उनको रिप्लेस कर रहे हैं. नंबर थ्री, ए लार्ज कस्टमर हैविंग ए बैलेंस ऑफ 5 करोड़ हैज नॉट पेड टू द कंपनी डिस्पाइट एफर्ट्स मेड बाय द कंपनी. एक कस्टमर है, उसने 5 करोड़ रुपए कंपनी के देने हैं, लेकिन वो दे नहीं रहा. कंपनी ने बहुत एफर्ट लगा लिया, लेकिन उसको पैसे मिल नहीं रहे. इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 डेज इन लास्ट ईयर टू 90 डेज. कंपनी का जो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है वो 30 डेज से लास्ट ईयर में, और जो करंट ईयर जिसका वो ऑडिट कर रहा है, जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा है, उसमें 90 डेज हो गया. सर इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो सर. फोर्थ पॉइंट जो है, हाँ, क्या यस. कहना चाह रहे हैं हम? वो कहना चाह रहे हैं कि से इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड की, कितने टाइम का स्टॉक, कितने टाइम की इन्वेंट्री कंपनी में रहती है. से अगर मेरे पास 1 महीने का स्टॉक रहता है, या 2 महीने का रहता है, या 3 महीने का रहता है. ओके. ऑफ से सेल्स. ओके. तो उसको मैं इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कह रहा हूं. या अगर मैं रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की बात कर रहा हूं, तो इन्वेंट्री ऑफ raw material consumed divided by raw material consumed divided by purchases. Okay, so this is the inventory holding period into number of months, or into number of days, into 365. तो वो 30 दिन से 90 दिन हो गया. So the company also gets carried out its job operations from third parties. Therefore, parts of inventories are lying with third parties. Okay. जॉब वर्क ऑपरेशंस. हाँ, कंपनी स्टूडेंट्स कुछ. जॉब वर्क जानते हैं स्टूडेंट सारे? ये स्टूडेंट्स सारी asking, do you know about work? What is the meaning of job work? थोड़ा सर जॉब वर्क मेरे को लगता है स्टूडेंट्स अभी, क्योंकि बिकॉज इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, अभी इन्होंने सेक्शन 194C कॉन्ट्रैक्ट्स का भी नहीं पढ़ा होगा. तो So job operation, students, Sari is asking me to explain to you.
So when a company gets some work done from third parties, it is called as job work. Like suppose मेरी कंपनी में शर्ट्स बनती हैं, तो मैं सपोज फैब्रिक तो खुद बना रहा हूं, लेकिन शर्ट्स की स्टिचिंग बाहर से करवा रहा हूं। तो जो मैं बाहर से काम करवा रहा हूं उसको जॉब वर्क कहते हैं। जो मैं बाहर से काम करवा रहा हूं उसको जॉब वर्क कहते हैं। तो दूसरी जो जॉब वर्कर है, मैं उसको लेबर की पेमेंट कर रहा हूं, मैं मटेरियल भेज रहा हूं और वो उसको स्टिच करके वापस भेज रहा है, जैसे उसको जॉब साइकिल, वर्क कहते हैं। अनदर एग्जांपल इज, जैसे सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि शर्ट्स के लिए फैब्रिक हम बना रहे हैं और फिर हम स्टिचिंग बाहर से करा रहे हैं, तो ये नॉर्मली इस तरह के जो काम होते हैं वो आउटसोर्स करते हैं हम। और आउटसोर्सिंग एक तरह से हो जाती है कि हम उस काम को किसी दूसरे को करने के लिए कह देते हैं। और ये एक हमारा जॉब वर्कर नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। जैसे एक का एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, साइकिल इंडस्ट्री। तो साइकिल इंडस्ट्री के अंदर जितने भी पार्ट्स है सब असेंबल्ड होते हैं। तो बाहर से पार्ट्स बन रहे होते हैं, इंडस्ट्री बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्री लगी होती है, वो सारे पार्ट्स बना के उसको सप्लाई कर रहे होते हैं। और फिर वो साइकिल बना के, जैसे A1 साइकिल है, हीरो साइकिल है, तो इस तरह से वो साइकिल बनाकर बेचते हैं। तो सारा काम जो होता है वो सारा जॉब वर्क पे और होता है बेसिकली। Okay, students. So, sir has also explained to you by giving an a separate industry example. So, probably you now understand correctly the meaning of job work. So, now we see the question, students. So, regarding first question, regarding drastic fall in revenue of the company, which of the following is an audit risk? अब कंपनी का रेवेन्यू स्टूडेंट्स 50 करोड़ से 5 करोड़ रह गया, तो क्या ये ऑडिट रिस्क है? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑडिट रिस्क है? ये द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू कि कंपनी का रेवेन्यू 50 करोड़ से 5 करोड़ रह गया क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में कम हो रही है। तो इसमें से कौन सा ऑडिट रिस्क है? इनमें से कौन सा ऑडिट रिस्क है? यस राहुल, यू आर आस्किंग अगर अपनी सब्सिडरी से भी करा रहे हैं तो सब्सिडरी इज ऑल्सो ए सेपरेट एंटिटी। राहुल, किसी भी कंपनी से आप करवा रहे हैं वो जॉब वर्क ही है, चाहे वो आपकी रिलेटेड पार्टी है, चाहे सब्सिडरी है, या जो मर्जी है, लेकिन वो जॉब वर्क तो है ही, क्योंकि आप कंपनी के अंदर वो काम नहीं कर रहे। यस, तो स्टूडेंट्स 7-8 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड प्रॉब्ली। दिस इज स्टूडेंट्स आई वुड से probably maybe cheating. So you are all writing the correct answer. So you are saying B because probably you have seen from your modules. So if you are seeing from your modules, students, no purpose is going to be served. But at the same time, if you have answered it on your own, then congrats to you guys. If you have answered it from your own. सो स्टूडेंट्स, अब आपने इन चारों को ऑप्शंस को पहले देखा, तो हम इसको बी ऑप्शन कैसे है, वी वांट टू, ऑडिट रिस्क क्या होता है, व्हाट इज द ऑडिट रिस्क? क्वेश्चन पूछ रहा है कंपनी की सेल 50 से 5 करोड़ हो गई, तो इस सर्कमस्टेंस में 50 से 5 करोड़ हो गई, तो ऑडिट रिस्क क्या है? सो पहली ऑप्शन पे चलते हैं, फॉल इन रेवेन्यू वुड रिजल्ट इन फॉल इन प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी। सर इसमें तो सबसे पहले सर ऑडिट रिस्क की अगर स्टूडेंट डेफिनेशन अगर रिकॉल कर ले माइंड में, ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर मे गिव एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन
व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। अगर स्टूडेंट्स आपने वो डेफिनेशन पार्ट जो मैंने आपको बोला था, जो होमवर्क आपने किया है या नहीं किया, अभी मैं आपसे पूछ लूंगा, सबसे पूछूंगा। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन के अंदर ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करके और फिर आप ऑप्शंस पे जाते हैं, जो सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, तो फिर आप उसको फटाफट से आप, और बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, बिकॉज हम आपको यहाँ बैठ के देख नहीं रहे हैं। और जैसे सर ने कहा कि आपने मॉड्यूल में से हो सकता है ऑप्शन देख लियो, आंसर देख लिया हो, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ। आप, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं तो आई डू नॉट नो आपने होमवर्क किया या नहीं किया। आई बिलीव वट यू आर राइटिंग ऑन द क्वेरी बॉक्स। तो स्टूडेंट्स, ये बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, उतना ही आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे होने वाली है अगर आप अपने आप से सच्चाई के उस पे चलेंगे तो उसमें मेरे को तो अच्छा लगता है अगर स्टूडेंट ये कोई कह दे कि मुझे काम नहीं किया, मैं कहता हूँ चलो आज से शुरू कर लो। तो स्टूडेंट्स, ट्रुथफुल रहना अपने आप से, ये किसी से आप हमसे नहीं कोई वो कर रहे। अगर आप आंसर देख के बोल रहे हो तो ये आप अपने आप से ही ट्रुथफुल रहना सबसे बड़ा वो है। ये सर। यस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि सर आपको बता रहे हैं कि आप ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन रिकॉल कर लें, तो उसमें क्या ऑडिट रिस्क का क्या मीनिंग है? द चांस दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। ठीक है। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू में फॉल हो रहा है, यानी कि सेल उसकी डाउन है, तो इसका क्या मतलब है? 50 से 5 पे आ गई कंपनी, इसका मतलब है कि ये डाउट है कि कंपनी क्या पता अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू भी कर सके कि नहीं, कि वो गोइंग कंसर्न कंटिन्यू रह सकेगी कि नहीं। स्टूडेंट्स, गोइंग कंसर्न आपने अकाउंटेंसी में भी पढ़ा है, आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे, मॉड्यूल 2 में भी आएगा आपका गोइंग कंसर्न के बारे में। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि कंपनी आने वाले समय में कैरी अपना काम जारी रख सकेगी कि नहीं। तो ये एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, आपने AS1 में पढ़ी होगी। तो आपने शायद AS1 तो स्टूडेंट्स पढ़ लिया अकाउंट्स में कि नहीं पढ़ा? ये वो फंडामेंटल फाउंडेशन में ही अकाउंटिंग। पढ़ा देते हैं मेरे ख्याल से सर। हेलो। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption जो है वो तो फाउंडेशन में ही स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं। हाँ सर, कह रहे हैं फाउंडेशन में ही आपने पढ़ा है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। सो गोइंग कंसर्न का मतलब है कि वो आने वाले टाइम में अपना फोर्सिएबल फ्यूचर में अपना बिजनेस कैरी कर पाएगी कि नहीं। सो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं स्टूडेंट्स, वो इस बेस पे बनती हैं कि the company is going to carry on its operation in its foreseeable future. This is a fundamental accounting assumption. वो हमेशा से implied होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, that is always implicit. That is why students we record say fixed assets on historical cost basis, and that is why we record current assets and current liabilities. We classify them as current assets and current liabilities, क्योंकि हमें पता है कि वो एक साल में पेमेंट आ जाएगी और एक साल में मैंने पेमेंट देनी है, because we assume that the operations would be continued as such, that the operating cycle of the company would continue to carry on. So अगर कंपनी की सेल्स इतना डाउन हो रही हैं और कंपनी के उसमें प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है, तो देर इज ए रिस्क दैट गोइंग कंसर्न is assumption is not correctly followed in the financial statements. So therefore it carries an, अगर गोइंग कंसर्न assumption करेक्टली नहीं फॉलो हो रही, अगर कंपनी की चांसेस हैं कि वो फ्यूचर आने वाले टाइम में इट वुड नॉट बी एबल टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशंस, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न पे बन रही हैं, तो इसमें क्या हुआ? इसमें ऑडिट रिस्क हुआ। इसमें प्रोबेबिलिटी किस चीज की होगी कि ऑडिटर माइट गिव एन इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन। ओके, सो दिस इज द राइट ऑप्शन बी। सो स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? और इसमें देखें, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये क्या चीज है?
फॉल इन रेवेन्यू वुड रिजल्ट इन फॉल इन प्रॉफिट फॉर द कंपनी। ये स्टेटमेंट तो ठीक है, अगर 50 से 5 टर्नओवर रह गई तो प्रॉफिट्स तो कम होंगे ही होंगे, लेकिन क्या ये ऑडिट रिस्क है? ऑडिट रिस्क तो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन के बारे में होता है, ये क्या है? दिस इज द बिजनेस रिस्क। ये तो कंपनी का बिजनेस रिस्क है भैया, उसकी सेल कम हो रही है, उसके प्रॉफिट कम हो रहे हैं, ये वो जाने, ये उसका बिजनेस रिस्क है। मैं तो एज एन ऑडिटर, मैं तो अपने ओपिनियन के बारे में कंसर्न हूं। आई एम कंसर्न विद माई ओपिनियन, दैट माई ओपिनियन शुड नॉट बी रॉन्ग। सो अगेन, द कंपनी कैन एक्सप्लोर सम न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी। सो ये भी एक उस बिजनेस रिस्क को एड्रेस करने का एक मेथड है, बिजनेस रिस्क एड्रेसिंग। ये तो कंपनी का पार्ट है, कंपनी को चिंता होनी चाहिए कि क्यों मेरा बिजनेस रिस्क, मेरा इस बिजनेस रिस्क को मैं कैसे टैकल करूं। एंड फोर्थ पॉइंट इज फॉल इन रेवेन्यू वुड मीन लोअर टैक्स लाइबिलिटीज फॉर द कंपनी। अगर सेल्स कम हो रही है तो प्रॉफिट भी कम होगा और टैक्स लाइबिलिटीज भी कम होगी, तो इसमें ऑडिटर रिस्क क्या हो गया? वो तो बिजनेस में तो सेल बढ़ती भी है, सेल कम भी होती है, बट हाउ आई एम कंसर्न विद एज एन ऑडिटर? मैं ऑडिटर बी ऑप्शन पे कंसर्न हूं। यस सर। इसमें तो गवर्नमेंट का कंसर्न आ जाएगा सर, इन लाइटर यस। वे। मैं बोल रहा हूँ यस। कि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कब मिलेगा कंपनी से जो पहले मिल रहा था? यस। इसका ऑडिटर से तो कोई लिंक होगा नहीं सर। यस। हम्म। यस सर। यस। सर, should we proceed to second Yes, question? yes, sir. Yes, sir. Definitely, sir. In the meantime, students, before we proceed to question number 2, मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट डे से बता रहा हूँ कि आप लर्निंग, जैसे ये सर ने इसको एक्सप्लेन किया, तो यही तरीका है पढ़ने का आपका। आप जब क्लास नहीं चल रही होती और जब आप खुद से पढ़ रहे होते हो, तो इसी तरीके से ही आप पढ़ा करो और इसी तरीके से आप चीजों को समझा करो। आपकी जो नॉलेज है वो बिल्डअप होती रहेगी। दो बातें मैंने आपको बताई थी शुरू से, पहले दिन से बता रहा हूँ कि एक नॉलेज बिल्डअप बहुत इंपॉर्टेंट सीए स्टूडेंट के लिए होता है, और सेकेंडली होता है एग्जाम में परफॉर्मेंस। तो एग्जाम में परफॉर्मेंस के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो आप स्लो लर्न किया करें चीजों को, स्लो रीडिंग किया, जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। आप सारे ऑप्शंस को एनालाइज करके कि क्या क्या, जैसे सर ने समझाया कि बिजनेस रिस्क है, और वो बिजनेस रिस्क को एड्रेस करने के लिए, और टैक्स लायबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कम जनरेट होने वाला है। सो इट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है इससे। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, ये है कि आप स्लो पढ़ें, फिर चीजों को इंटरलिंक करके, लिंकेज मेथड मैंने आपको समझाया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि जब क्लास खत्म हो जाती है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिख लो जरूर, आपको काम आएंगे बहुत ज्यादा, एग्जाम तक ही काम आएंगे आपको। और जब क्लास अटेंड करना हमारा हमारा खाली मकसद नहीं होता, क्लास के बाद पढ़ना, कम से कम 3 to 4 आवर्स मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स की आप ऑडिटिंग पे जरूर दिया करें। तो उससे क्या होगा, सब्जेक्ट आपका धीरे 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 पॉलिश होता जाता है। अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट मैं आपको आज इसमें ऐड करूंगा, वो भी मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद या केस स्टडी के बाद एक और आपको टिप बताऊंगा बहुत अच्छा, जिससे कि आपके मार्क्स बहुत ज्यादा जंप होते हैं। यस, यस सर। Yes. Question number 2, guys, is the company's products are getting outdated in the market. Now, which of the following is an audit risk? आप कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक नहीं रहे, ओके, दीज आर गेटिंग आउटडेटेड, कस्टमर और अच्छा प्रोडक्ट डिमांड करता है और वो अच्छा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर दे रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ऑडिट रिस्क क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, जो 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उसमें ऑडिट रिस्क क्या है? ये स्टूडेंट्स, company should devise strategies to sell products in the market. Inventories may be understated, inventories may be overstated in such a scenario. Company should launch a free 1+1 free offer for its customers. Yes. तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से जो सर ने पहले आपको समझाया उसी से सॉल्व करके और आप अपना आंसर खुद निकालें। आंसर देखने की कोशिश ना करो, और एक एक
ऑप्शन को एनालाइज करो पहले कि क्या होगा इसका इम्पैक्ट, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है आउटडेटेड हो रहे हैं, तो इन्वेंट्री पे असर क्या होगा उसका। तो ये सारी यस, चीजें स्टूडेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोहर यादव आप पूछ रहे हैं कि ओवर स्टेटेड का क्या मतलब है। ओवर स्टेटेड का मतलब है कि किसी चीज की वैल्यू अगर एक्चुअल में उसकी 100 रुपए है, तो वो 120 रुपए फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट हो रही है। या अगर से 50 लैक्स है, तो 60 लैक्स रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अंडर स्टेटेड का मतलब है कि 50 लैक्स है और 40 लैक्स रिफ्लेक्ट हो रही है। यस। सो क्या ऑडिट रिस्क है स्टूडेंट्स? यस, सम आर राइटिंग ऑप्शन B, some are writing C, and probably some are writing A. So सर मैं students, तो जो स्टूडेंट्स ए सी ऑप्शन दे रहे हैं, ए बी जो दे रहे हैं या डी दे रहे हैं, तो उनको स्टूडेंट्स को आप सर उसी मेथड से एक बार समझा दो। यस, यस स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन जो केस सिचुएशन अब बता कितने रही है, स्टूडेंट्स हैं सर जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं? अरे अबाउट होंगे 40-50%। अच्छा, ठीक है सर। सो तो उनका स्टूडेंट्स, सर मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जो जो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आप अपने बेसिक्स को और स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि जैसे सर आपको बता रहे हैं, जो मेथड सर आपको सिखा रहे हैं, जैसे सर आपको पढ़ा रहे हैं, और जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, या तो आप वो तरीके इंप्लीमेंट नहीं कर रहे अभी, तो उनको इम्प्लीमेंटेशन करना बड़ा जरूरी है स्टूडेंट्स। तो मैं इम्प्लीमेंटेशन पे भी अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, इम्प्लीमेंटेशन करना। और अभी जो स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे, जो तरीके मैं समझा रहा हूँ, वो अभी आज से शुरू कर दे। चलो, अभी तक जो टाइम बीत गया उस बीत गया, लेकिन आज से तो शुरू करो आप स्टूडेंट्स। यस सर। तो स्टूडेंट्स कोई सिचुएशन वॉज कि कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहे, वो आउटडेट हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन इज आस्किंग, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या ऑडिट रिस्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडिट रिस्क? तो ऑडिट रिस्क क्या होता है कि ओपिनियन गलत दे दे। ठीक है। ओपिनियन ऑडिटर कब गलत देता है? सपोज अगर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, जो भी डिफरेंट असर्शंस हैं, वो गलत हो। मान लो प्रॉफिट्स गलत हैं, मान लीजिए ट्रेड रिसीवेबल गलत है, मान लीजिए इन्वेंट्रीज गलत हैं। तो that is an example of misstatements. So अगर इन चीजों में misstatements है और ऑडिटर उसको डिटेक्ट नहीं करता, तो वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देता है। ठीक है। तो अब इसमें से ऑडिट रिस्क कौन सा है? द कंपनीज शुड डिवाइस स्ट्रेटेजीज टू सेल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। सेम सेम स्टूडेंट्स, अब ये कंपनी के प्रोडक्ट बिक नहीं रहे, तो कंपनी क्या कर रही है? बिजनेस रिस्क एड्रेस कर रही है अपना। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, तो सबसे पहले तो कंपनी को चिंता होगी ना। कंपनी वुड बी वरीड कि यार मेरे प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे। सो व्हाट इट वुड डू, इट वुड डिवाइस मेथड्स टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स। सो इट इज ए वे ऑफ एड्रेसिंग देयर बिजनेस रिस्क। तो ये बिजनेस रिस्क स्टूडेंट्स वही बिजनेस रिस्क है जो आपने इंटरनल कंट्रोल में एज ए सेकंड कंपोनेंट पढ़ा था, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। आपको याद होगा, सेकंड कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कि जो कंपनी के रिस्क हैं उसको कंपनी को आइडेंटिफाई करना है और उसको इवेल्युएट करना है। सो ये तो कंपनी का बिजनेस रिस्क है, जिसको वो कम करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बना रही है कि भैया सोच रही है कि या तो उसके लिए कोई मेथड बनाए कि कैसे हमारा प्रोडक्ट बिके। सो हाउ इट इज एन ऑडिट रिस्क? डिवाइस का मतलब होता है जयेश भाई बनाना। द कंपनी शुड फॉर्मुलेट, डिवाइस मींस फॉर्मुलेट, बनाना। नए नए तरीके खोजना, जैसे डिवाइस, यस, नए 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 तरीके। तरीके बनाना। यस। एंड सेकेंड इज इन्वेंट्रीज में बी अंडरस्टेटेड इन सच ए सिनेरियो। अब क्या
जब कंपनी के प्रोडक्ट्स इन्वेंट आउटडेट हो रहे हैं तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी इन्वेंट्रीज कम वैल्यू पे शो होंगी? जो 100 रुपए वाली चीज है, क्या वो 90 रुपए में शो होगी अगर उसके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं तो वैसे तो इन्वेंट्रीज पाइल अप भी तो हो जाएंगी ना सर। हाँ। पाइल अप भी हो जाएंगी तो अंडरस्टेटेड का तो कोई मतलब ही नहीं है। सो अंडरस्टेटेड का कहां से मतलब है? वो तो ओवरस्टेट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर उसके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे तो वो इन्वेंट्रीज उसकी इकट्ठी हो जाएंगी, ओल्ड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा, और उसके लिए उसको ये देखना पड़ेगा इसमें कितनी इन्वेंट्रीज ऑब्सोलीट है। ऑब्सोलीट है, सबसे बड़ा पॉइंट यही आएगा फिर। तो उसको कितनी इन्वेंट्री स्लो मूविंग है, कितनी ऑब्सोलीट है, कितना डेड स्टॉक है, उसका उसको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो यहां पे देर इज ए रिस्क दैट इन्वेंट्रीज में बी ओवरस्टेटेड इन सच ए तो सिनेरियो। ये इसमें हिडन हिडन स्टूडेंट्स, ये इसका जो बहुत डीप आंसर है, सी जो डीप जो सर ने ऑप्शंस बनाए हैं, इट इज वेरी डीप रूटेड। क्योंकि स्टूडेंट्स इन्वेंट्रीज में भी ओवरस्टेटेड, अब ओवरस्टेटेड में सबसे बड़ी बात है, जैसे सर ने समझाया कि कुछ हो सकता है डैमेज्ड इन्वेंट्रीज हो, कुछ ऑब्सोलीट हो चुकी हो, खराब हो गए हो माल, तो वो ऑडिटर के लिए रिस्क बनेगा। यस सर, ग्रेट सर। ठीक है। So the company should launch a 1+1 free offer for its customers. अब ये भी एड्रेसिंग ऑफ बिजनेस रिस्क है। एड्रेसिंग बिजनेस रिस्क एड्रेसिंग। So the answer is the that the inventories may be overstated, कि इनफैक्ट वो माल उसके पास इकट्ठा हो रहा, वो गुड्स उसके पास इकट्ठे हो रहे हैं, और कंपनी ऑब्सोलिसेंस का उसमें प्रोविजन नहीं करती। ओके, सो इट वुड लीड टू इन्वेंट इट मे लीड टू इट वुड नॉट नेसेसरली लीड टू, हम रिस्क की बात कर रहे हैं, हम चांस की बात कर रहे हैं। सो it may lead to a situation, it may lead to a chance where inventories may be overstated. So what is that? This is the audit risk. This is the chance that auditor might express an inappropriate opinion. Yes, 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 मनोहर यादव, भाविका कुमारी, आप इसको गलत समझ रहे हैं। Why should inventory, you are asking why should inventory would be overstated? जब माल इकट्ठा हो रहा है, और आप इन्वेंट्री कैसे वैल्यूएट करते हैं? सपोज आप इकट्ठे होने की बात छोड़ दें, आप कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे मार्केट उसको वैल्यूएशन करते हैं AS2 के हिसाब से। तो जब अगर कंपनी के प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज ए चांस कि जिस कीमत पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दिखाए गए हैं वो ज्यादा है, और इनफैक्ट में उनकी कीमत कम है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? यस मनोहर यादव, भाविका कुमारी, इज दैट क्लियर? और जब जब स्टूडेंट्स, वेन एवर ओल्ड स्टॉक्स गेट्स एक्यूमुलेटेड, the company would have to make a provision for outdated stocks. अगर तो स्टूडेंट्स कंपनी ने अगर ये प्रोविजन बना दिया तो फिर रिस्क नहीं होगा ये। अगर हाँ, स्टूडेंट्स, मैं डाउट समझ गया स्टूडेंट्स का, जो ये मनोहर यादव और भाविका कुमारी का डाउट आ रहा है ना, वो ये सोच रहे हैं कि कंपनी के जो कंपनी ने प्रोडक्ट्स पहले ही कम दिखा दिए होंगे तो फिर ऑडिट रिस्क नहीं होगा। ये तो रिस्क है। ये तो हम बात कर रहे हैं रिस्क की, इन्वेंट्रीज में भी ओवरस्टेटेड है, ये पक्का नहीं है ये। सर ने पहले इस बात को क्लैरिफाई कर दिया था कि ये पक्का नहीं, मे भी है। क्योंकि ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन में देखो, आपको इससे क्लैरिटी ऑफ थॉट कितना जबरदस्त हो रहा है। ऑडिट रिस्क में बी डिफाइंड एज द रिस्क दैट द ऑडिटर मे गिव है, वहां पे शैल गिव नहीं है। द ऑडिटर मे गिव एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। तो स्टूडेंट्स वहां पे शैल नहीं है, मे है कि ऐसा हो सकता ना भी हो।
अगर ऑडिटर चेक कर रहा है, ऑडिटर को वेरीफाई कर रहा है, तो ऑडिटर कहता है कंपनी तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है, कंपनी ने तो पहले ही ऑब्सोल्यूट की वैल्यूएशन कम कर दी और डैमेज स्टॉक कम कर दी, जो भी वर्ड्स एवर इज देयर। तो अगर वो वैल्यूएशन पहले ही ठीक है तो फिर रिस्क नहीं है ये ओवर स्टेटमेंट का। लेकिन ओवर स्टेटमेंट का तो रिस्क है, क्योंकि बिक रहे नहीं, हो सकता है कंपनी उसी वैल्यूएशन पे कैरी करती रहे, हो सकता है कंपनी सोचे कि अभी माल बिक जाएगा, अभी बिक जाएगा, अभी, ये सोचते सोचते ही तो ओवर स्टेटेड हो सकते हैं सर, ये बोल रहे हैं। Yes, Siva Ranjani, you are asking me to again explain it in English. What the point is, when the company's product are not selling as desired by the company, when the demand of the product is falling, it means that stocks are getting accumulated in the company. So when the old stocks are getting accumulated in the company, it means that there is a chance, there is a possibility that some of these stocks may wear down. Okay, there is that some of these stocks could be because these are old, these can't be sold at their carrying value. So in such cases, even these stocks may have to be sold at market price, at realizable value, which is less than their cost. So normally cost is more than the, when we value stocks at cost or market price, whichever is less. Okay, normally cost is less and market price is more. But in such a situation, there can be a case when market price is less and cost is more. The company may have to sell the product in the market at a value which is lesser than its cost, because कि वो बिक ही नहीं रहे, तो मैं उसको डिस्काउंट में बेचूंगा ना, 100 रुपए की चीज 80, आई वुड सेल an item costing rupees 100 in rupees 80 just to finish my stocks, just to make them move. So there is a chance that inventories could be overstated. So is that clear to you, Siva Ranjini? Now, Sneha, also I have explained this in greater detail. Already this point has been explained in greater detail, that why understatement can't be there. Yes. Sir, should we move to question 3? Yes sir, definitely sir. Yes. A large customer has failed to pay to the company. Identify audit risk from below. A company, the company had sold goods to some customer, and the customer has not paid the amount of rupees 5 crore. So it is a fairly large amount. So identify the audit risk from below. So from the 4 options given below, what is the audit risk? Yes. Yes, guys. Yes, Sarvanshu, you are saying how to tackle tough sentences in the exam. No, the language used is of normal level, Sarvanshu, but you have also to improve your vocabulary a little bit. So when you remember, when you go through the modules in auditing, so many words would be added in your vocabulary. And when you find that you are not understanding the meaning of word, just Google it out and understand what it means. सर Simple. मैं थोड़ा सा इनको बता दूं सर इस बारे में, जो क्वेश्चन कौन है सर Sir, ये? the student is from South India, so please explain in English. ओके सर, ये स्टूडेंट्स, हु इज दिस स्टूडेंट? Student name is Sarvanshu. Sarvanshu, your question is a welcome question, because many students face this problem of English and the auditing. Particularly students in auditing, language
language is commanded language. Language comes from standards on auditing, and many things are explained in the study material, and some difficult words, words from dictionary are also there. So students, my advice to all of you, while you study auditing, have a dictionary, good dictionary, Oxford dictionary or whatsoever, Webster's dictionary with you. So you should keep a good dictionary with you, or and do not Google the words. Do not see from Google. Keep a dictionary with yourself, and keep a hard copy of module with yourself. And whenever you encounter difficult words which you are not uh, interpreting, so see from dictionary and write in your notebook the meaning of the words. The tough words you should write in the notebook. And whenever you encounter tough sentences, difficult sentences, my advice to you is, instead of reading them 5 times, you read them 10 times, 15 times, so that the crux of that is established in your mind. So students, keep a good dictionary with you, and in case you are having tough sentences, then you should read it at least 10 times instead of 5 times, because 5 times reading is the best. I see. I advise to you, all of you, I advise all students to read at least 5 times each and every sentence which is there in the module. But in case you encounter tough sentences in the study material, you find it difficult, then you should read 10 times, 15 times, no bar on it. Because my advice to all of you is, you study slowly. So slowly study. Do not be in hurry to study. Be patient with yourself, so that things are established in your mind. And by this method, students, your digestion, your understanding of the subject will get very much broad, and you will be understanding and appreciating the things in the right manner. Yes, sir. Yes. Probably you have understood, Sir Vanshu. So sir is asking you to keep a hard. It is very important to implement. So, Sarvanshu, this is very important. It is very important to implement the things. We do listen the things, but we do not implement on that. If you start implementing what I am suggesting, so you are bound to gain. So because my techniques, whatever I am suggested, these are time-tested techniques. Those students who have followed those techniques, they have come up with good marks, with flying colors, scoring more than 60% marks in auditing. So students, you should implement. And once you start implementing, you will start enjoying. I am sure, at least. Yes, sir, you can continue, sir. Yes, another technique जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, students. Another technique is, आप जैसे 8 to 10 hours अगर दिन में पढ़ते हैं, आप स्टडी कंटिन्यू करते हैं, तो एक शेड्यूल रजिस्टर अपना जरूर बनाइए. ये शेड्यूल रजिस्टर आप एक सेपरेट नोटबुक लगाइए अपनी, जिसमें आप डेली का अपना शेड्यूल लिखिए. ये डेट वाइज और सब्जेक्ट वाइज बनता है शेड्यूल रजिस्टर, कि किस सब्जेक्ट के अंदर आज आपने क्या काम किया, उसके अंदर डॉक्यूमेंट कर लें. तो उसके अंदर जब आप डॉक्यूमेंट करेंगे स्टूडेंट्स, से आप आज अगर ये देखना चाहें कि आपने 15 दिन पहले क्या काम किया था, तो आप नहीं देख पाओगे, आपको मालूम ही नहीं होगा, बिकॉज यू डिडंट डॉक्यूमेंटेड. तो स्टूडेंट्स, इस शेड्यूल रजिस्टर, बिलीव मी कि शेड्यूल रजिस्टर की हेल्प से ही आप कम से कम 10 to 15 मार्क्स एग्जाम में ज्यादा आ जाते हैं आपके ओवरऑल. ये शेड्यूल रजिस्टर इतना आपको हेल्प करेगा, बिकॉज ये आपकी क्या करता है, आपकी स्टडीज को, जो आप पढ़ रहे हो लंबे समय तक, आपको 3, 4, 5 महीने, 6 महीने पढ़ना पड़ता है, तो वो क्या करता है, आप ये पता लग जाता है कि मैंने क्या चीज कितनी बार हम कर चुके हैं.
तो क्या टॉपिक हम कितनी बार हम उसे कर चुके हैं, अभी कितना और करने की जरूरत है, ये सारी बातें शेड्यूल रजिस्टर आंसर करता है। एक बार आप बनाना शुरू करेंगे तो आप उसे एंजॉय करेंगे। तो शेड्यूल रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैं स्ट्रेटेजीज बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स आज से ही आप शेड्यूल रजिस्टर अपना बनाएं, और नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको आऊंगा तो जरूर पूछूंगा किन किन स्टूडेंट्स ने शेड्यूल रजिस्टर बनाया। ये डेट वाइज बनाया जाता है और सब्जेक्ट वाइज बनाया जाता है। उसके अंदर किस सब्जेक्ट में आपने क्या काम किया ये लिखना है। और आप मुझे व्हाट्सएप करो शेड्यूल रजिस्टर, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर आपके मेरे दोनों मोबाइल जो मैंने आपको शेयर किए हैं उन पे व्हाट्सएप चलता है। आप शेड्यूल रजिस्टर बना के मुझे व्हाट्सएप करिए कुछ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूंगा आप ठीक पैटर्न पे बना रहे हैं या नहीं बना रहे। यस सर। यस। सो थर्ड क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स कि एक कस्टमर ने 5 करोड़ रुपया कंपनी का देना था और उसने दिया नहीं, और एफर्ट्स कंपनी कर रही है उसको लेने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी द कंपनी इज नॉट सक्सेसफुल। ओके, सो आइडेंटिफाई द ऑडिट रिस्क। अब ऑडिट रिस्क क्या है इसमें से? आप तो आपको स्टूडेंट्स, आपने 2 क्वेश्चन सिमिलर इस पैटर्न के कर लिए, यू हैव डन 2 क्वेश्चंस। सो व्हाट इज द ऑडिट रिस्क इन दिस? सो ऑडिट रिस्क इज chance that auditor may give an inappropriate opinion. It is the possibility that auditor gives an inappropriate opinion. So what would happen, students? Say 5 crore rupees, company has made some effort, great effort, but it is not able to recover from the debtor. So what is its impact on debtor? So obviously debtors are, if the company doesn't make provision in its books of accounts for bad debts or for doubtful debts, then the debtors may be overstated. The receivables may be, are likely to be overstated. There is a chance that receivables may be overstated. So the option is option B. So students, जो स्टूडेंट्स बिना ऑप्शन सारी पढ़े, दो देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव आल्सो गिवन आंसर एज ऑप्शन ए। सर ए तो और बी में वाकई कंफ्यूजन है थोड़ा, वो क्लैरिफाई कर दीजिए सर या स्टूडेंट। वाई स्टूडेंट्स, जब एमसीक्यूज में आपको यू हैव टू चूज द बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दो जब द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सो स्टूडेंट्स, अगर डेटर्स ओवरस्टेटेड हैं तो although they are misstated but they are overstated. So अगर तो इसमें ये overstated वाली ऑप्शन नहीं दी होती तो then we could have said that these are misstated, but here the option given is overstated. So इसका डायरेक्ट इंपैक्ट किससे है? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ओवरस्टेटमेंट ऑफ डेटर्स. So the best option is overstatement, because misstatement includes both the things, understatement and overstatement. In this situation, there can be no possibility of understatement. So the best option is overstatement. Is that clear, sir? यस सर, यस सर, नो इट इज क्लियर सर। So guys, therefore it is important for you to read all the options. बिकॉज स्टूडेंट्स क्या होता है कि नैरो डिफरेंस होता है, जैसे इसमें जो बहुत नैरो डिफरेंस था, तो जो सर ने एक्सप्लेन किया आपको, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप देखिए क्या आ रहा है एमसीक्यूज के अंदर। तो वो तभी आप कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करते हुए, क्या है कि चारों ऑप्शंस, क्या है जल्दीबाजी वहां पे एग्जाम में आपको कैसे हैंडल करने हैं एमसीक्यूज, चारों ऑप्शंस पढ़ के एटलीस्ट टिक करो। ऑफ कोर्स एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता आपको, लेकिन आप प्रैक्टिस घर, तभी मैं आपको कहता हूं कि आप चीजों को स्लोली डाइजेस्ट होने दें। अगर आप स्लोली डाइजेस्ट होने देंगे अपने माइंड के अंदर, तो क्या है कि आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। और अगर आप तेजी दिखाते रहेंगे ना अभी, तो एग्जाम में स्लो करेंगे फिर। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं सबको ये बात बताता हूँ, तैयारी करते हुए जल्दी मत करो। अगर आप तैयारी करते हुए जल्दी नहीं करोगे तो एग्जाम में आपकी स्पीड तेज होगी, और अगर आप तैयारी करते हुए जल्दी करोगे तो एग्जाम में स्पीड कम होगी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम एग्जाम पूरा नहीं कर पाते, ये इस तरह छूट जाता है, रह जाता है। तो बिकॉज उसका एक ही रीजन है कि आपके एग्जाम में स्पीड कम होती है, क्योंकि आप पहले जल्दबाजी से तैयारी करते हो। तो अगर आप पहले चीजों को अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने दो,
चीजें एबीसी की तरह आपकी आने लग जाएं, तो फिर जब चीजें एबीसी की तरह आने लग जाएंगी ना, तो फिर आपको एग्जाम में तेज लिखने से कोई आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड ही तेज हो जाती है। ऑटोमेटिक स्पीड, आपको तेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू राइट फास्ट। सो स्टूडेंट्स, ये जो तरीके मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इन पे इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें। और जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, जो होमवर्क दिया था, क्या सभी स्टूडेंट्स ने कर लिया है? वो होमवर्क वहां तक पहुंच गए हैं? और आगे भी उसको कैरी फॉरवर्ड करें, उसी तरीके से बढ़ाएं। अभी आज मैं आपको होमवर्क नहीं दे पा रहा बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जब वेडनेसडे को हम मिलेंगे, तो मैं आपको होमवर्क दूंगा। और पिछला जो आपने काम किया वो भी एक बार चेक कर लेंगे कि आप कहाँ तक अभी। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स क्या हैं जो अभी स्टार्ट भी नहीं कर पाए, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जो कम कर पा रहे हैं? ये सर कुछ रिस्पॉन्स है? Yes, sir. Sneha is asking that please show me the column and rows to write the schedule register. So Sneha, this I am answering you on behalf of sir, if sir हाँ, permits me. So Sneha, you can make your own register and send a photo of that on WhatsApp number sir has given to you. If any corrections are required, you can आई sir विल will सजेस्ट इन inform नेक्स्ट you. लेक्चर। Sir will inform you. हाँ, तो मैंने स्टूडेंट सभी को अपने मोबाइल नंबर शेयर कर रखे हैं, और दोनों नंबर पे मेरे व्हाट्सएप, मैं दोनों नंबर पे हूं, तो आप व्हाट्सएप मुझे कर दीजिए। मैं आपके शेड्यूल रजिस्टर इंडिविजुअली मैं एक बार देख के, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक बार एड्रेस कर दूंगा इशू दोबारा से। Yeah. Jagapati, you are stating that mistake is a broader term and overstated is a specific term. Yes, misstatement is a broader term and overstatement is a specific term in relation to that. So अगर ये overstatement वाली ऑप्शन नहीं होती तो misstatement भी ठीक होती, अगर इसकी जगह कोई और ऑप्शन होती। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको चीजों को क्रैम नहीं करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको उनको अंडरस्टैंड करना है। हो सकता है एग्जाम में कोई और ऑप्शन आ जाए, ये थोड़ा केस स्टडी एग्जाम में आएगी आपको। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड Zahida, you are saying I am always confused between two options. So Zahida, you improve your learning and you try to better your understanding. So then you will be able to pinpoint the correct option. So you should get comfort that at least you are able to weed out two options, that you have got so much understanding that at least you are able to remove two options. So probability of now hovers, it is 50-50 between two options. So at least this much understanding you have already got. तो So अभी improve your कौन से understanding. स्टूडेंट ने सर, ये किस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा सर? मैं थोड़ा सा Zahida, जहीदा, South India. ये मैं आपकी He इंफॉर्मेशन के is लिए, from आप South अभी India. अभी डिस्करेज ना हो इस बात से कि आप हमेशा दो ऑप्शंस, बिकॉज सर ने बिल्कुल ठीक पहचाना कि आप एटलीस्ट दो ऑप्शंस तो आप रूल आउट कर रहे हैं, आप उनको तो छोड़ रहे हैं ना, रिमूव कर पा रहे हैं। तो अभी आपकी जो नॉलेज बिल्डअप है, वो अभी आप चैप्टर 3 पे चल रहे हैं। जो काफी सारे चैप्टर्स हैं जो भी आने बाकी हैं, क्योंकि 11 चैप्टर 11 तक, तो जो भी अभी आपका जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑडिटिंग है, वो भी धीरे धीरे बनेगी। अभी पूरी अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑडिट एविडेंस, मेनी चैप्टर्स आर येट टू कम। ऑडिट एविडेंस है, एथिक्स वाला चैप्टर भी अभी आना बाकी है, और ऑडिट प्रोसीजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो चैप्टर 5 है, जो आपकी नॉलेज को एकदम से ब्रॉडन कर देता है, तो अभी आना बाकी है। अभी आप इतनी जल्दबाजी में अपने कंक्लूजन्स मत निकालें कि आप कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बस करते रहें, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं उस पर करते रहें काम। और ऐसे एमसीक्यूज तो वैसे भी जब चैप्टर अंडरस्टैंडिंग के बाद लास्ट स्टेप होता है, तो अगर आप गलती नहीं, अभी गलती करना बेटर होता है। एक और एंगल ये होता है स्टूडेंट्स, कि अभी आप बिफोर हैंड, यहाँ पे जब आप तैयारी के दौरान गलती करेंगे तो बहुत अच्छा, आपको, आप अपने आप को लकी समझिए कि आप गलती कर पा रहे हैं, बिकॉज वो गलती फिर आपके एग्जाम में नहीं होती है। तो जितनी भी आप गलतियां करें उनको आप, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस गलती को आगे रिपीट ना करें, और उसको अच्छी तरह से समझ लें कि हमने गलती कहाँ करी है, और ऑप्शंस को अच्छी तरह एनालाइज करें। वो तभी होता है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो सर ने आपको कंसेप्चुअल बैकग्राउंड दिया, उसको आप अच्छी तरह से क्लैरिटी रखें माइंड में। सर, आई वुड लाइक टू टेक लीव सर। Okay, sir. थैंक यू सर, Sir, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। और आप, मैं विश करता हूं कि आप
जैसे पढ़ रहे हो इसी तरह से पढ़ते रहो, और मुझे अच्छी अच्छी आपकी वो क्वेरीज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जो स्टूडेंट्स क्वेरीज पोस्ट करते हैं, और आंसर देना मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स आप। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं, बिकॉज टाइम टाइम टेस्टेड तरीके हैं ऑलरेडी, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो उन तरीकों को इम्प्लीमेंट करके और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आप, एक बार राह पे चलना मुश्किल होता है, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन एक बार आप वो तरीके अपनाने शुरू करेंगे, इम्प्लीमेंट शुरू करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, आप एग्जाम बहुत अच्छा कर पाओगे। तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स फिर एड्रेस करूंगा ये सारी बातें, और कुछ नई बातें भी हम लेकर आते हैं स्टूडेंट्स। और विद दीज वर्ड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for थैंक यू your सर, valuable थैंक यू सर, words. थैंक यू सर। So, sir is taking leave, guys. So, identify audit risk when involved when inventory holding period has increased from 30 to 90 days. So, again, students, ये पहले दो क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। सो इन्वेंट्री रिस्क जो है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बढ़ गया, इट मींस मोर इन्वेंट्रीज आर स्टोर्ड, मोर इन्वेंट्रीज आर पाइल्ड अप। सो व्हाट शुड बी द आंसर? यस, what should be the answer? Yes, guys, it is again related to second question which we had done. There is a risk of overstatement of inventories. So the question is in different form. There is a risk in relation to overstatement of inventories, because what does, if the inventory holding period increases, if I was earlier holding stocks of 30 days and now my stocks are piling up, and I am now holding stocks for a period of 90 days. Okay, so then it means that that I am holding more inventories, and the inventories are not moving as fast as these were moving in the previous year. Okay, so if the company does not make adequate provision for obsolescence, for obsolete inventories, then it carries risk of overstatement of inventories. So it carries risk of overstatement of inventories. So answer is option A. So there is a risk relating to existence of inventories? Obviously not. Inventories तो है ही, existence का कैसे risk है? How risk is related to existence of inventories? सिर्फ यही है कि स्टॉक ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, एग्जिस्टेंस से तो इसका कोई मतलब नहीं है। देयर इज ए रिस्क दैट स्लो मूवमेंट ऑफ स्टॉक्स would increase tax liability when GST rates are increased. Again, it has got nothing to do with the audit risk. Okay, this is also a business risk. There is a risk relating to holdage and storage cost of inventories. This is also a business risk. कि जितनी ज्यादा इन्वेंट्रीज है तो उनको स्टोर करने की भी कुछ कॉस्ट है, उतना द मनी इज ऑल्सो टाइड अप इन इन्वेंट्रीज. So the company is not able to convert those inventories into debtors and thereon into cash. So obviously the funds are tied up in inventories, funds are invested in inventories. So the company is not able to generate cash from those inventories. So obviously these would carry a storage and holding cost. So but this is also a business risk. So there is a risk of overstatement of inventories, but this is audit risk, that auditor may express an inappropriate opinion. Because why? Because inventories in such a case may be overstated. There is a chance that inventories could be overstated. Okay, so this question again was related to question 2,
although it is framed in a different language. Okay. Number 5, parts of inventories are lying with third parties. Identify audit risk involved. कुछ इन्वेंट्रीज जो है थर्ड पार्टीज के पास हैं, क्योंकि जॉब वर्क के लिए कंपनी जॉब वर्क काम करवाती है जॉब वर्क पर. सो दीज ऑब्वियसली व्हेन यू सेंड गुड्स फॉर जॉब वर्क, these would be lying with the job workers, although these are inventories of the company, but these would be lying with job workers, not in the premises of company. Okay, so identify the audit risk involved. So what could be the audit risk here? Yes, what could be the audit risk here? Could be the audit risk here? Yes, students. So students, agar if we see option A, there is a risk that third parties do not manufacture according to the specifications of the company. So this is also a business risk. इसमें audit risk कहां से आ गया? So Devraj, you are writing A. How it is an audit risk? It is a business risk कि कंपनी का माल उसके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा, तो इट इज ए बिजनेस रिस्क. ऑडिटर को तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन देखना है भाई आपका. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीज इफेक्ट करती है? ऑप्शन सी. सो दिस इज द राइट आंसर, दैट द ऑडिटर may not get evidence about the existence and condition of the inventories, क्योंकि वो स्टॉक जो है थर्ड पार्टीज के पास पड़ा है. So there is a possibility that the auditor may not get evidence about the existence and condition of those stocks, क्योंकि वो किसी और के premises में पड़ा है. So auditor may not get evidence. So on account of that, there could be probability that financial statements could be misstated, and the auditor may express an inappropriate opinion. Yes, Manohar Yadav, you are asking why not D? There is a risk that sufficient appropriate evidence would not be available for quality control. So students, whether a product is manufactured in accordance with the quality control requirements of the company, उसी स्पेसिफिकेशन का है कि नहीं. सपोज एक कंपनी पाइप्स बना रही है, तो उसमें पाइप एक स्पेसिफाइड मिलीमीटर डायमीटर की है, या उससे 0.1 या 0.01 कम या ज्यादा है, ये किसका रिस्क है? ये ऑडिटर का रिस्क थोड़ा, ये तो कंपनी का रिस्क है. अगर वो प्रॉपर क्वालिटी की नहीं है तो कंपनी का माल नहीं बिकेगा, कंपनी का माल डिफेक्टिव हो जाएगा. ऑडिटर को तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिस्क के बारे में देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो मिसस्टेटेड है या नहीं है. तो अगर आप किसी से जॉब वर्क करवा रहे हैं, तो ऑडिटर का पहला कंसर्न होगा कि भैया वो स्टॉक है भी या नहीं है, क्योंकि कंपनी में तो है नहीं. So the auditor's first concern would be whether that stock exists or not, और उसकी कंडीशन क्या है, because he doesn't know about it. वो किसी और के पास पड़ा हुआ है, थर्ड पार्टीज के पास. So there is a chance, there is a likelihood that he may give an inappropriate opinion. Yes, Kalkotar, inventory valuation is done by management, not by CA. It is done by management, but the auditor has a responsibility to verify it. He has to see that valuation made is proper. But at the first place, valuation is done by the management. So students, आपको clear है ये case study? Students, I hope कि your understanding has improved a bit. ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत
10%, 20% कुछ आपकी इंप्रूव हुई होगी इस केस स्टडी के साथ। तो स्टूडेंट्स क्विकली आपकी क्वेरीज ले लेते हैं। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में क्या क्वेरीज है आपकी? Yes, Ashok Kharyal, I have already told you about the point at point 8.2 on page 3.55. And Ashwini, what is difference between inaccurate processing of data and processing inaccurate data? Inaccurate processing of data means that there is some problem with processing itself, and processing inaccurate data means that the input data being processed is wrong, that there are errors in input data itself, for which there are application controls which we have considered. Yes, Ashwini, is it clear to you? Yes, Devraj, you are asking how many page written in one question. Probably you are asking how to answer one question. Yes, you can answer one question of 3 to 4 marks in 2 paras. That would be sufficient. So normally whatever you get in the exams, these are very specific questions. These are not such type of question asking you to fill sheets to fill 4 pages of 1 3 mark 4 mark question. Normally these would be restricted to 1 page or even lesser than that. Okay. Yes, Rahul Sharma, to what an extent inquiry can be done? Yes, there is no extent, Rahul. The auditor can always seek a valid inquiry on all the aspects which concern him as an auditor of financial statements. Yes, students, any other thing? Yes, any other doubts? Yes, students, any other doubt relating to chapter 3? Because on Wednesday we will be starting a fresh new chapter 4 on audit evidence. So any doubt remaining on chapter 3, students? No, Priyanka, I'll be teaching you chapter 4. So you check the schedule again. I'll be teaching you chapter 4, and Rajiv sir will be joining also. So students, through this case study, the board of studies is trying to explain to you the concept of audit risk. So स्टूडेंट्स, अगर आप ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन, उसका मीनिंग, इफ यू रिमेंबर इट प्रॉपरली एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट्स इंटेंट, व्हाट इज इट्स कॉन्टेक्स्ट, ओके, so you will not make mistake. Okay, so thank you students once again for listening to us. Thanks a lot. So see you on Wednesday, guys. It's over for